It's all, I really appreciate Ayush Mohan giving this opportunity to present the sales and marketing and why it's important. I tell you, many people have been focusing on development, PE and everything, but why is sales and marketing very important? उसके पीछे का reason क्या है? किसी को कुछ नहीं पता. So guys, any such, अभी मैं Q&A तो बाद में करूँगा, but any such why is it important? Anyone? This work. And I usually cater for India, North America, and Middle East as well. And again, train a double-star ranger, practice, keep on taking me practice as well. And I have 30 plus connections and followers more on LinkedIn. Reason of that because not only Salesforce community, because there are other clients as well from US market who have been enrolled with me. So this is all about expertise. I've been working on sales, service, marketing, health cloud to mera, I love that, and education cloud. I've been working in education cloud for certain, I work with many of the IMs as well. So yeah, I'll move ahead. Right, lead generation एक funnel है, right? You would say एक funnel है, उसमें मैंने बहुत चीज डाल दिया. हो सकता है मैंने I have put in all the social medias, मैंने third party apps डाल दिए, मैंने एक properly CSV file Excel की मैंने पूरा डाल दिया. There are multiple of things. अब funnel है वो. अब मैं funnel को precise करूँगा. Right. So I want to data mining. Data mining पहले बोलते थे data sourcing. Data source करना, like we do that data sourcing and data mining. अब data mining में भी होता है as per the criteria approaching a prospect. Data mining है सो जब मैं बैठे काम data निकालो ऐसे कभी नहीं होता. Data के पीछे ये होता है the given criteria. मेरा requirement क्या है? तभी तो मैं data निकालूँगा. और data निकालने के भी बहुत सारे you have many things. That is LinkedIn. I mean, we did not exactly sales navigator. लोग आजकल LinkedIn में भी यूज करते हैं. Sales navigator हम जैसे for the leaderships when we work on sales navigator. मैं आपको अभी automation में दिखा रहा था. So there was Ghost running on my system जो automatically लोगों को LinkedIn में क्यों connect कर रहा है. I have 200 people. मैं कुछ नहीं मैं laptop नहीं पढ़ा मैं. I'm just going around. सब कुछ automatically connect कर रहा है. I will show you in the later part. And I'll show you the practical as well. Then we have Zoom Info, Lucia, Leadzilla, Rocket Witch, Bitwith. आपने कभी नाम सुना Bitwith का? Anyone? Bitwith. तो आप डिजिटल मार्केटिंग हो. Anyone? आपको मैजिक नहीं पता Bitwith का? बैठे बता दूँगा कौन सी कंपनी कौन सी Salesforce प्रोडक्ट यूज कर रही है. मैं पिच भी कर दूँगा. Right. बताऊँगा इसके बारे में. Now, when we come अभी bottom line, when we go data mining and data validation है. डेटा माइनिंग मैंने भी बात होती है बहुत सारी फील्ड्स आपको बताऊंगा भी आगे बहुत सारी चीजें कॉलम्स हेडर्स हैं हम लोग एक्सेल शीट में नोट डाउन करते हैं बिकॉज़ हम लोग डेटा वैलिडेशन करते हैं हर चीज स्क्रैप डेटा वी कैन नॉट सेल इट ऑन माइग्रेट ऑन सेल्सफोर्स राइट क्योंकि सेल्सफोर्स में भी हमें फिर बहुत सारी चीजें हटानी पड़ती है सो वी गो ऑन डेटा वैलिडेशन और डेटा वैलिडेशन में होता है मैनुअल सर्च किसी की लिंक्डइन आईडी होती है किसी की कुछ XYZ होती है या कोई बंदा आप लिंक्डइन आईडी पर जाते हैं कभी-कभी आपने नोटिस भी किया होगा कोई भी डायरेक्टर या VP लेवल होता है कभी देखा उसका 150 कनेक्शन होंगे 200 कनेक्शन होंगे देखा होगा शायद मैंने देखा दैट पर्सन इज नॉट एक्टिव बट स्टिल वो उसकी कंपनी में लिंक्डइन में दिखा है प्रेजेंट अभी भी काम कर रहा है 90 डेज लास्ट 100 डेज में दैट पर्सन इज नॉट एक्टिव होता है सो वी सर्च ऑन दैट क्या पता आज जो मैंने डेटा सोर्स किया है अब मुझे वैलिडेट की भी नीड पड़ती है आज टुडे इज 7 आज मैंने डेटा सोर्स किया है और नेक्स्ट सैटरडे शायद वो बंदा जो डायरेक्टर हो किसी और कंपनी में शिफ्ट हो गया ही मूव ऑन वो डेटा मेरे लिए तो प्रेजेंट है वो मैंने अभी सोर्स किया अभी मेरे पास अभी 10 दिन और है मैं और डेटा सोर्स करूँगा बीच में जाएगा आई स्टार्टेड डूइंग द कॉलिंग्स एंड सब कुछ आ गया चेक किया तो देखा अरे तो बंदा छोड़ के चला गया अभी रिसेंटली स्विच किया पर वो मेरे डेटा मेरे लिए तो खराब है सो प्रॉब्लली आई कैन रिमूव दैट द बेस्ट वे इज दैट टू चेंज द कंपनी पूरा डिटेल पूरा चेंज करो उसकी राइट The next thing about the data is the email checker. It's very good for for us for a single individual person. जब हम when we talk about sales and marketing हम किसी को email भेजते हैं या हम लोग बात करते हैं, right? So the best way is that आप किसी sales में किसी को approach करो ना, I say that you should have the correct data, the correct phone number, the correct email address, right? Don't predict.
कि जैसे if I talk about if Ayush bhai is working in entity data, जरूर थोड़ी नहीं है Ayush got मंगल at entity data को, ऐसा नहीं है. हो सकता है कि A single हो सकता है कि A dot A underscore हो सकता है, right? So there's a process, there's a tool where how to check your email can be validated. सही गलत वही फैसला लगेगा अभी, right? I'll show you that. Now then it goes to the migration, data migration में जाएगा. तो एक्सेल में जितना जो डेटा प्रॉपर वैलिडेट हुआ है वो जाएगा या तो ज़ोहो में या तो फिर सेल्सफोर्स में. सो प्रॉब्ली भी मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो सेल्सफोर्स इट्स वेरी ट्रू, बट जो सेल्सफोर्स यूज करते हैं वो ज़ोहो भी यूज करते हैं. इट्स वेरी ट्रू. सो वंस इट गोज टू जो माइग्रेशन जाता है देन वी सेट अप द सेल्स कैंपेन अंडर व्हिच द पाइपलाइन इज जनरेटेड. तो पाइपलाइन जनरेट होना बहुत जरूरी है, एक कैंपेन बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस कैंपेन में आप अपने फ्रॉम अकाउंट्स अपॉर्चुनिटी अकाउंट्स लीड्स एंड अपॉर्चुनिटी अपडेट कर सकते हो और उसके लिए मार्केटिंग वाले को बहुत फायदा होगा. सो देन इट गोज टू अगेन, सो दीस आर द प्रोसेस गाइस. कोल्ड कॉलिंग, कॉल करके जो डेटा है उसको कॉल करके पूछेंगे लाइक यस हाय मिसेस स्मिथ एंड सो ऑन. वी डू दैट, राइट? वंस वी हैव द व्हाइट पेपर और वंस वी हैव द स्क्रिप्ट विद अस. ईमेल मार्केटिंग व्हिच इज वेरी मैंडेट. And SMS campaign बहुत rare होता है, but it uses when digital marketing agencies they use that, right? And digital marketing again, like handling the social handles, tagging and so on. Then I go up, appointment generation. Appointment generation एक खुशी होती है जहाँ पर एक appointment schedule होता है किसी prospect के साथ, जहाँ पर now we come to the picture. Appointment generation होता है cold calling, जो data हुआ. अब हो सकता है appointment generation दो तरीके की है, चार तरीके भी हैं. ये कोल्ड कॉलिंग, ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस एंड डिजिटल मार्केटिंग, राइट? बट आई विल गो विद टू थिंग्स, ईमेल मार्केटिंग एंड कोल्ड कॉलिंग. कोल्ड कॉलिंग में कॉल करके देन वी स्पीक लाइक यस वी नीड टू फिक्स एन अपॉइंटमेंट विद यू रिगार्डिंग द सेल्स क्लाउड मार्केटिंग क्लाउड, सो एंड सो यू विल यूजिंग दिस प्रोडक्ट्स एंड ऑल. सो फॉर दैट लाइक वी गो अहेड एंड वी फिक्स एन अपॉइंटमेंट विद आवर ओएस, आई मीन विद द ओएस मैनेजर्स, विद द सेल्सफोर्स एक्सपर्ट. तो जो अपॉइंटमेंट जनरेशन होती है उसके बाद मेरे पास आती है, फिर मैंने डेमोस जो रिक्वायरमेंट्स पहले कॉल होती है कि व्हाट विल शो यू, हम डेमोस दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट्स, क्या चाहिए उनको. देन वी गो द डेमोस, ये डेमोस हियर. देन आफ्टर दैट इफ कन्वर्टेड देन नेगोशिएशंस एंड क्लोज वन. इफ नहीं देन अपडेट अंडर द सेल्स कैंपेन एंड मार्केटिंग कैंपेन. सपोज मार्केटिंग कैंपेन तब रिक्वायर होती है जब हमने कम से कम 100 कॉन्टैक्ट्स हैं, उसमें से 50 कंपनीज को हमने रीच किया, पर वॉइस में यूएस में तो वॉइस में ही चलता है. बट उसके बाद फिर हम मार्केटिंग कैंपेन को रीच करते हैं कि जो डेटा है, जो लिस्ट है, राइट? वी हैव अ टैग असाइन टू मार्केटिंग इन ज़ोहो, बट इन सेल्सफोर्स वी असाइन दैट टू द मार्केटिंग कैंपेन. उसमें मार्केटिंग कैंपेन क्रिएट करते हो. क्रिएट करने के बाद देन वी सिलेक्ट नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स, जो कॉन्टैक्ट्स अब सिलेक्ट करना है, जो वॉइस में से एज पर द स्टेटस, एंड यू कैन गो दैट. तो वहाँ से मार्केटिंग कैंपेन पिच करेगी एंड वर्क ऑन दैट. So guys, this is how this is started. If no, then you can start the process again. So marketing campaign अलग काम कर रही है, जो respond नहीं कर रहे काफी टाइम से, जो voice में जा रहे हैं, and the next is about to start the process again. वही calling करो, वही कर काम है. So guys, this is very important. Now we'll move ahead. Criteria करो, mind करो. No, as per the criteria, we should set the criteria. अगर मुझे कोई industry में like if I need to tap any consulting partners. So we have consulting partners in United States. Suppose मैंने किया मैंने geography में, I use a sales navigator, right? United States, North America, and industry में I need to focus on healthcare industries. अब healthcare industries में मैंने headcount लिया, मुझे कौन से कितने मतलब कैसे टाइप की कंपनी चाहिए. Employee size मैंने select किया 200 and 500 and 1000. Then the current job title. I think that who would be the decision makers when it comes to because obviously I cannot tap managers or any person. I would tap the directors or VPs or anything regarding that. अगर मैं marketing cloud और बेच रहा हूँ, if I want to pitch, if I want to get the decision makers of marketing cloud, so probably I would have the marketing head, VP of marketing, क्योंकि उनके पास ही वो authority होती है that what tool I'm using, right? It's very important. So if I'm talking about selling my health cloud to them, approaching with the health cloud, so probably I would have director of IT managers. Why? Because sometimes what happens is you cannot tap director of IT directly. आप कोई organization में काम करें तो IT manager bridge बना के जाना पड़ता है
right? So to reach a particular, obviously you cannot direct reach to a prime minister. You need to go with certain everything from the scratch. कि medium से जाओ तब जाके reach करो, appointment लगती है आगे, और mail transfer होता है, and so on, right? Head of again technology, marketing directors and marketing so and so. क्योंकि health cloud is not only मैं health cloud pitch करूँगा, health cloud में भी marketing में pitch करूँगा, क्योंकि marketing cloud एक sorry health cloud एक ऐसा है कि जो most in India most of people are using HIS, right? उनकी marketing अलग ही चलती है, वो कोई cloud पे कुछ नहीं चलती है. They are using health cloud में they are using like Napier, they are using Odoo and many other things, but marketing में अलग चलता है. ऐसे नहीं मैं health cloud ही pitch करूँगा, I could pitch sales, service, health, marketing. Do all these ones. So this is my criteria. और आपको दिख रहा है कि prospects ये सारे कॉलम दिख रहे हैं, account name, first name, ये हमारा है. ये डेटा उस लेवल का पूरा सोर्स होता है, जो मैंने आपको बताया था प्रोसेस, जो डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं लिंक्डइन से, हर चीज से करते हैं. तो ये सारे ईमेल एड्रेस हमें ये वी नीड दिस, वी बेसिकली नीड दिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि उसके बेसिस पे हम लोग कैप्चर करके सेल्सफोर्स में अलग वी माइग्रेट दैट पर्टिकुलर डेटा. रेवेन्यू, एम्प्लॉय साइज, लिंक्डइन आईडी चाहिए होता है, and the status and so on. So we require this headquarter number, direct number. So probably there are numbers, headquarter, head office, and direct numbers is might be his direct number or with extension number, right? So guys, any such far, like you have anything doubt in this till now? Any confusions regarding this? Status, I mean, status भी है सर, right? Status भी upload like voicemail है. कॉल किया मैंने, voicemail तो voicemail डालूंगा. Not interested, not interested डालूंगा. Right? So there are multiple of things. How that? Did not pick. Right? Right? We cross check whether the data has any duplicate referring to the mentioned field. कभी-कभी ऐसा होता है कि जो डेटा मैनेजमेंट टीम होती है, right? डेटा मैनेजमेंट टीम क्या होती है कि वो बैक टू बैक वो 480 मिनट्स 8 घंटे में दे सोर्स 400 कॉन्टैक्ट्स. उनकी स्पीड पूरी ऐसे होती है, उनका कुछ नहीं होता, मुंह में तंबाकू रहेगा, स्पीड, दैट्स इट, फुल स्पीड. कोई मतलब नहीं है, बिकॉज उनको डिलीवर करना होता है. कभी-कभी ऐसा भी होता है दैट इट सीम्स लाइक व्हेन यू कभी-कभी डुप्लीकेसी भी आती है, कभी-कभी डुप्लीकेसी भी आ जाती है. सो कभी मैंने एक निकाला एंटिटी डेटा, मैंने 10वें नंबर पे निकाला और 100वें नंबर पे दोबारा एंटिटी डेटा निकाल दिया, डुप्लीकेसी आ जाती है. सो इन एक्सेल वी डू हैव डुप्लीकेसी चेकर. ऐसे नहीं एक्सेल में नहीं है कि मैं पूरा डेटा में सेल्स में वी कैन डू वैलिडेशन एज वेल, बट मैं पूरा डेटा माइग्रेट क्यों करूँ सेल्स में जब मेरे पास एक्सेल में पूरा लिखा है डुप्लीकेसी हटाओ. सो वी डू द डुप्लीकेसी ऑन द नेम ऑफ ईमेल एड्रेस. हेलो I told you guys, I'll make it very interesting. So we also cross-check whether the information in the data is incorrect. If yes, we refer to the multiple source platform operated using the below platform like. So we do the data validation again और उसको change करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था, if anyone is working in this company, उसने भी recent एकदम change किया है, एक महीने भी नहीं हुआ है, हम आके change कर देते हैं पूरा, right? Company names and everything we do that. ठीक है? Why am I mentioning all these logos? Because like इसी से मेरे leads close होती है. I do these logos around. So guys, once the data validation gets completed, the process is now called data migration. हम फिर data migration करते हैं. आपके सामने एक Excel sheet दिख रही है. These are all validated data, right? मैंने गिरिकोन का भी नाम डाल रखा है यहाँ पर. तो आलो अपने पास. So probably he designation हटा दिया, but he sits in Greater Philadelphia. So I put over here. तो हम लोग इनको कॉल अप्रोच करते हैं for having those things, like all these people. So guys, we do the implementation. So there are two types of sales where we sell Salesforce, or we sell implementations, support and services by selling these Salesforce. We don't sell licenses, but only thing is that we approach them, we do the customization, implementation and so on, right? And then we work on certain clouds. दूसरा ये है, we provide C2C staff augmentation. जब हमारा बंदा यहाँ बैठे उनके प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है, right? For we did 8 months, 9 months, or we did 18 months.
So this is what staff augmentation is, right? अभी यहाँ इनमें से मेरा कोई client closure हुआ अभी सीधा सब मैं बताऊँगा नहीं कौन सा client closure हुआ नहीं बताया okay this data you should not at least what I want to say. And you're showing this kind of things to your open what hello. What we want to say is, if you are showing this kind of data in some audience, what you should do, you need to hide some part. Maybe some part of the phone number, some part. Because you don't want this data to be presented to all the audience. this The point is that you are showing that what you can do, but in PMPA, PML part, in this part. yeah the phone numbers and the email address are wrong मैंने जानना चाहिए क्योंकि मुझे पता photos capture होती है but again guys when we talk about certain things don't capture this because the names and its names are correct right as per the email address ये सारे गलत हैं मैंने कुछ डाल रखे हैं right इसमें बताया था कि ayush.mangal@identity जरूरी होगा email वही तो ये आजकल यही चलता है इसमें particular scope but I show you the Salesforce part as well right so this is all these when we talk about the prospects so ये ऊपर दिख रहा है कोई campaign set करना बहुत जरूरी है example Salesforce Noida campaign and so on उस campaign के अंदर भी build up the prospects पूरा बनाते हैं जितना डेटा हमारे पास आता है 517 आता है डेटा अब उसमें हमने वीडियो की there are filter prospects हम filter लगा सकते हैं we check out which is the hot leads warm leads and so on तो ये campaigns this is the reason how to set a campaign campaigns के अंदर क्या प्रोटेक्ट करो क्योंकि campaigns के अंदर you can assign to marketing अगर सबसे ज़्यादा voice में जा रहा है how to reach a prospect तो marketing यहाँ पर होना बहुत जरूरी है filtration again filtration how to set a filtration over here be it warm leads hot leads and cold leads and then LinkedIn से जो पूरा डेटा आप you can do the filtration this is all the filtration okay you can do that क्योंकि आप जब भी कोई डेटा डालते हो तो उसमें फील्ड होता है कि source of the data LinkedIn हो गया sales navigator हो गया you have many other things as well so you can put over here cold calling rocket sing I'm missing one of the rockets but Joseph so once the data validated data migrates to the lead generation inside system starts calling these data with the product and white paper handy white paper आज के टाइम में I don't think so white paper is needed white paper का use होता है call centers होते हैं TPOs में but seriously once you have a good summarized knowledge of any product be it Salesforce so you go like this so I love to be like these guys but okay I go for US I like to be equal to Wall Street right so these houses like you can go with the script and rest are smart rockets and like go to Wall Street they both they go with the flows right email marketing it's all gurus on my team seriously once you have that particular data under the campaign and if you assign to a particular marketing and the data is validated so probably I don't feel any concern regarding this but probably I use the data email marketing we use marketing cloud for sending emails we use Zoho CRM we have that we use MailChimp as well as now we are using all these things right at the same pace there are different teams who have been using that so we usually get the reports कितने clicks आए कितने क्या है कितने leads आए कितने ratios पे आए how many leads have been bounced back again guys just for knowledge for yours because sales and marketing है थोड़ा टॉपिक है जितने ज़्यादा bounce back आएंगे उतना आपका अकाउंट को रिस्क होगा email marketing the reason why because the email marketing runs depending on the various sales campaign that we have created and so their content strategies changes it is very important to know if take an example existing मेरे पास email marketing है जैसा आपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया था हम बेचते हैं एक होता है लाइसेंस भी हो सकता है दूसरा होता है हम प्रोडक्ट्स बेचते हैं to be a custom implementation partner और हम लोग जैसे we work on the practices sales service marketing तो मैंने न्यू ऐसा यूजर रखा है मैंने अप्रोच भी किया सारे जो कंसल्टिंग पार्टनर्स हैं Salesforce practice leads उनका अलग है और existing Salesforce users means for those companies who are using Salesforce products
तो मैंने एग्जाम्पल existing Salesforce product यूज किया, so let's take a real time how it's being created and executed. So there are certain screenshots at the real time कि अब मुझे इनको भेजना कैसे existing Salesforce users को. इनकी स्क्रिप्ट अलग होती है, सबकी स्क्रिप्ट अलग है. Every different have a different script and different call areas, right? Example. ये मार्केटिंग, ये ईमेल मार्केटिंग की ये पूरा काम करती है. हाउ इज इट वर्क? ये स्ट्रैटेजी होती है गाइस. दिस इज द स्ट्रैटेजी ऑलवेज डिजाइन एंड ऑलवेज प्लान एंड ये शुड बी ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, राइट? ईमेल टॉपिक देख लो, डेट देख लो, राइट? 28 सब्जेक्ट लाइन अनलॉक 60% more each convert discover. Subject line differs a lot. बहुत important होता है subject line. Right? Type of Salesforce puzzles. Keep on engaging people regarding that. Use Salesforce का एक अच्छा practice है. Use bold letters, bold and crisp clears. Right? Don't use any images here because वो कहीं ना कहीं spam में जाता है. Right? But I practically use your header should be amazing. And again, running on this particular campaign. Right? To keep your customers engaged or anyone engaged. Yes, so we ran a campaign on 28th of September for existing users only. कितनी emails गई हैं? 311. Delivered 239. तो bounce back, open rates ये सारे आएंगे. तो जब delivered 239 दिए तो bounce back से calculate कर लेना. 311 minus 239. तो open rates कितने लोगों ने open ये unique leads है तो 3 आएंगे. I have 3 leads, and this is from the email marketing. So I have, so यहाँ से भी closure I can get closures, or from the call as well I can get closures. Right. So guys, these things I need to capture a lot. These are things of email marketing do struggle from the backend. There's a lot of many things, SEO, SMM, right, SMO. Other things like where digital marketing works together and they build up on the social medias. Appointment generation. The discussion on appointment generation is after connecting your prospects. So definitely, हम चाहते हैं कि appointments schedule from with the expert to understand to have a given demo. Demo में ये नहीं होता सीधे जाके live demo दीजिए ना. पहले होता presentation, understanding about the company's policies, understanding about the company's go-arounds, use cases हमारे ने क्या-क्या काम किए हैं. Most probably अगर मैं healthcare industry में काम कर रहा हूँ तो मैं healthcare वाली use cases क्या है, what we have done, right, what we have pitched. So ये सारे हमें appointment generation दिखाते हैं. So guys, to crack an appointment to be till the negotiation part, it doesn't take 1 or 2 probably 1 or 2 meetings. It takes a lot of struggle, right, to bring up to the requirement stage. But yes, when we do certain follow-ups, right, when we have certain very good use cases, probably we can bring that particular customer to close point, right? So this is what about the demo. After the appointment, how the demo expert gathers all the business requirements over the call or might over the email after understanding their challenges, right? And it goes with the product. Expert then works with his or her technical expert and work on solution designing. And solution designing is very important, guys, very important, right? And if there is any customization required, then we give a tag to the client, turnaround time and approach for a last demo, right? And if the client agrees to the solution given, आता है budget estimation. ठीक है, अब budget में आपको बताता हूँ budget कैसे रोल आउट होता है. जब सब कुछ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आ गई, ये बड़ा स्टोरीज आ गया, अब हम करते हैं यहाँ पर I usually take part in budget cost estimation, right? So we design कितने डेवलपर्स लगेंगे, हर डेवलपर की क्या कॉस्ट होती है, what the cost पर आर बेसिस में, whether we need junior developer, senior developer, BA, project managers, ये सारी पूरा हम रोल आउट करके मैनेजर से डिस्कस करके फिर क्लाइंट पे करते हैं. वैसे तो बजट आगे देते हैं क्योंकि मुझे पता है क्लाइंट नेगोशिएट करता है और इंडिया सबसे ज़्यादा नेगोशिएट करता है. So approvals and closures, NDAs and scope of work. Then it goes on with the again another development part. But guys, is it well said in the previous scenario that हमने किया था scenario 10 में कि जाना चाहिए PA को लोगों को, but वो काम मैं भी करता हूँ. I normally go to the developer. क्या चल रहा है? Because I want my client, because sales guys, sales is a front face of client. Every time. गाली सुनेगा sales, कुछ भी करेगा sales, appreciation सुनेगा not sales, sorry, it's a truth, right? It's a truth. Variables मिलेगा sales को नहीं, developers को. हमें target और achieve करना है, over achieve करना है, right? So I don't think that I should have a particular Mercedes given, but
टारगेट से ज़्यादा है डिलीवरी मैनेजर सर but I'm happy over here getting Salesforce goodies. That is where it becomes difficult for a delivery manager to deliver it in the same budget which you have. अगर क्लाइंट ने कह दिया कि 500 घंटे को कर दो तो आखिर में तो उसमें भेज जाते हो डेवलपर को पता है कि कितना Yeah. Again, see, see, it happened. Yes, a situation हुए हैं मेरे पास जैसे मैंने अपलोड से कुछ उठाए थे, क्लाइंट अपलोड से आए थे और फाइनल से भी आए थे. But there was like हम लोग यही करते थे. We would work 30 hours in a week. 30 घंटे हम हफ्ते में काम करेंगे. हमारे लिए कॉस्ट होगा. क्लाइंट का कॉस्ट होता है कि we will give you $50 or $80 on hourly basis per person. So we work on that. But otherwise, जो major cost आती है projects की, we do before sharing with the client, understanding all the criteria, हम लोग पूरा jot down करते हैं scope of work, फिर then we decide कि कितना time period में होगा और हम cost ज़्यादा इसलिए रखते हैं because obviously ज़्यादा हम लोग पैसे बचाने के चक्कर में भी senior लोगों से काम करवाते हैं junior से. So that is the part. So this is why I relax. अभी ये मेरा कल वाला movie था जब मेरा closure हुआ था on the biggest line. So this was a successful moment. But again, this is all guys. So thank you. I seriously appreciate Anuj bhai, and so I really appreciate it. And Yogesh as well. And guys, real prospect for I'm just pushing you as well. So guys, next probably I would have next in all the practicals. ये ज़्यादा मैंने practicals से दिखाया, but I will be showing you the full speed of how to cross sell the data, how to source the data, and how to build the data. Or the next would be more interesting. मैं आपको live call करके दिखाऊंगा लाइव कॉल आपको पता चलेगा कि पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग में नाम हेलो कुछ नहीं रहेगा ब्लैंक रहेगा बट आई नो हाउ टू पिच इट